So we are very pleased to have you with us, Dr. Shikha, for this session. Welcome I am pleased as to well. the show. Thank you. So, shall we begin? Yeah, sure. Great. So how does gum disease manifest itself in diabetics? Okay. So diabetes and gum diseases, they both, as per the current research, has a two-way relationship. What I mean by saying this is it's not just if you are having diabetes, you are prone to gum diseases. That is for sure, because the American Dental Association, it states that if a person is a diabetic, that person has 3 times more chances than a normal person to get a gum disease than a non-diabetic person. On the other hand, the current research, it suggests that those people who have gum diseases, or in our term we say periodontal diseases, they are also prone to have diabetes in the future. Okay. So how does diabetes happen? Like, what is this correlation? Why does this happen? Between Oral health and gum diseases and diabetes. Okay. Yeah. See, if I talk about the inverse relationship first. So when a person is having gum problems or gum diseases, that time the body responses to the gum infections that can spike your blood sugar levels. That is one reason. Another one is the inflammation. अगर किसी को gum diseases हैं, there is a high chance it will be he or she would be having inflammation or swelling, which again is a risk factor for diabetes. Now, if I speak about why diabetes can lead to gum problems, there can be 3 reasons for that. The first one, if a person is a diabetic, in that case, there are blood vessel changes which happens in a person. If whenever there are blood vessel changes, so in this case, जो भी nutrients होते हैं, that are not adequately provided to each part of the body. If in here, the gums would be weakened, and in this case, then there would be a high risk of infection in a diabetic person. Next, diabetes, the disease itself, and the medications which are used to treat diabetes. These two impact the salivary glands. अब salivary glands क्या होते हैं? These are the glands which produce saliva in our mouth. Saliva, the fluid which is present in our mouth. Saliva, it plays a major role. अब saliva क्या क्या करता है? वो हमारे माउथ में जितना भी रेमिनेंट फूड पार्टिकल्स होता है वो इसको रिमूव करता है. नेक्स्ट, कोई भी हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो करने से वो प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट, इट इनफैक्ट इट ऑल्सो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है. इट फाइट्स बैक दैट एसिड so that oral health, it could be prevented from any damage. Lastly, the third point, जब भी डायबिटीज होती है तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा होते हैं. अब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होते हैं तो इनफैक्ट हमारे सलाइवा में भी ग्लूकोज लेवल्स या ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे. सो ये ना एक आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाता है हमारे बैक्टीरिया को. तो माउथ में when there will be बैक्टीरिया और वहां पे उनको ऑलरेडी ग्लूकोज मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ डायबिटीज हमने जैसे अभी बात करी सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब सलाइवा कम है हमारे पास ग्लूकोज भी आ गया एंड रेमिनेंट फूड पार्टिकल्स बिकॉज दे आर नॉट बीइंग फ्लश्ड अवे बाय द सलाइवा. सो दैट क्रिएट्स दैट एनवायरनमेंट फॉर अ बैक्टीरिया टू ग्रो. एंड ये आइडियल एनवायरनमेंट एक प्लाक को बनाएगा. प्लाक क्या होता है? एक बायोफिल्म होती है जो टूथ के अराउंड बन जाती है. अगर इसको टाइमली हम नहीं क्लियर करवाते या इसको टाइमली हम इसका ध्यान नहीं रखते तो विद टाइम इट हार्डन्स, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, एक व्हाइट कलर का जो कभी कभी टूथ पे दिखता है, विच डजंट गेट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग. तो जो टार्टर होता है या हमारा कैलकुलस जिसे हम बोलते हैं, ये बन जाता है तो वो गम्स को इम्पैक्ट करने लग जाता है. लाइक सपोजिटली आपका कोई टूथ है, उसके आसपास सपोजिटली दिस इज योर टूथ, ठीक है, इसके आसपास आपका वो गम वो टार्टर बन गया. अब वो गम्स और टूथ के बीच में आ जाएगा एंड इवेंचुअली द गम्स वुड बी इम्पैक्टेड. सो विद टाइम ये जो टूथ और हमारे गम्स को जो होल्ड करके रखते हैं टूथ को, उसके आसपास के स्ट्रक्चर, उसको लूजन अप कर देता है. वर्स्ट केस सिनेरियो, इट कैन लीड टू टूथ लॉस. If I can summarize all of this. That's pretty डरावना in some way. So not if you take care of yourself. Yeah, tell me. Yeah, right.
How can individuals with diabetes recognize early warning signs of gum disease? Okay, see, very simple. Initially, when you have just started getting any gum diseases, the main thing which patient notices is bleeding gums. आप ब्रश करते हैं, आप कुछ हार्ड सब्सटेंस खाते हैं, यू नोटिस ब्लड वाइल ब्रशिंग और वाइल ईटिंग, एप्पल हो गया तो फ्रूट्स पे लग गया, कुछ भी हो गया. अनदर थिंग, योर गम्स इट वुड बी इन्फ्लेम्ड, वहां पे आपका स्वेलिंग होगी, आपका इन्फ्लेमेशन होगा. नेक्स्ट, देर वुड बी कभी कभी यू विल हैव पेन इन योर टीथ, इरिटेशन होता है, पेन होता है. ऑल्सो विद टाइम अगर ये थोड़ा प्रोग्रेस करने लग जाता है तो जो आपकी गम लाइन होती है वो रिसीड करती है. डू आई नीड टू एक्सप्लेन रिसीडिंग गम्स? सो हम बेसिकली रिसीडिंग गम्स क्या होता है कि आपका जो टूथ होता है ना, टूथ के और टूथ और नीचे हमारा रूट होता है जो हमें दिखता नहीं है. तो एक जो हमारी गम लाइन होती है, वो गम लाइन जो होती है वो टुवर्ड्स द रूट जाने लग जाती है. इसमें रूट ideally should not be visible, but in the case of receding gums, it pushes towards the root, because of which we can see the roots, and it also loosens up the teeth. Okay. So yeah, loosening of teeth हो जाएगा. ये होगा तो हमारा जो टूथ की नॉर्मल पहले स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे स्पेसेस आने लग जाते हैं, टूथ की आपकी एनाटमी थोड़ी चेंज होने लग जाती है जो आपको पहले दिखती थी. नेक्स्ट, देर कैन बी चांसेस कि टूथ जो है आपका मोबाइल होने लग गया, मतलब वो हिलने लग गया. द टूथ कैन बी लॉस्ट. ओके, तो ये घूम फिर के वहीं पहुंच रहा है कुल मिला के. Right. So there are stages where you can intervene. Right. So apart from tooth loss, what are the possible long-term impacts of delayed treatment in terms of specifically in terms of diabetics? Gum diseases का क्या long-term impacts होता है? Delayed treatment का. Delayed treatment, long-term impact if I say, जो इसने tooth loss को छोड़ के अगर कुछ इंटरवेंशन नहीं किया तो एट द एंड होना तो वही है. बट इनिशियली क्या होता है, आपका माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, आपको थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो गया, थोड़ा इरिटेशन हो गया, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं. Right. अभी आपका जिंजिवाइटिस है, बट अगर इस स्टेज पे आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो आपके गम्स के अराउंड के जो और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे टूथ को और हमारा जो गम होता है, इन दोनों के बीच में एक वो दो आइडियली दे शुड स्टिक टुगेदर, राइट. यहाँ इसको बॉन्ड करने वाला क्या होता है, हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट, जिसको हम द टर्म इज यूज्ड एज पेरिडोंटल लिगामेंट. विद टाइम इफ इट्स आपका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हुआ, आपका टार्टर या आपका ये फूड डिपॉजिट्स होने लग गया, बैक्टीरिया आने लग गया, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके आसपास का, वो लूज होने लगता है. तो द टूथ एंड द गम दे डू नॉट स्टिक टुगेदर, इनके बीच में एक स्पेस आ जाता है जिसको हम कहते हैं पॉकेट. तो ये पॉकेट्स डेवलप होने लग जाती है, जहां पे आपका फूड एक्यूमुलेट होगा, आपका बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा. दिस विल इवेंचुअली लीड टू बोन लॉस अराउंड द टीथ ऑल्सो. अब आपका बोन लॉस होने लग जाता है, आपका स्ट्रक्चर, आपका जो टूथ जहां होल्ड कर रहा है जिस चीजों को, वो सब लूज होने लगता है. आपका पेरिडोंटल लिगामेंट लूज हो गया, आपका बोन लूज हो गया. इवेंचुअली इट विल you are at the risk of losing your teeth if timely intervention is not done. Okay. So how often should a person with diabetes schedule dental checkups to monitor and manage gum disease? Especially the risk effectively. Okay, so ideally any person, be it a diabetic or non-diabetic, they should consult their dentist every 6 months. अब डायबिटीज के केस में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन सिवियरिटी अलग अलग होती है, राइट. So in this case, if it will completely depend on the individual condition कि आपको कितना frequently डॉक्टर के पास विजिट करना. 6 months is the ideal one, but if you have आपको पेरिडोंटाइटिस हो गया, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गई, so the visits they should be rampant. Also, on that note, whenever a person is diabetic, is consulting a doctor, you must go and tell your doctor that you are diabetic. कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है अगर आप डायबिटिक हैं और आप डॉक्टर को नहीं बताते हैं, योर ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि एक तो आपका डिलेड हीलिंग हो जाएगा, आपकी हीलिंग स्लो होती है. सेकेंडली, यू आर एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मच मोर देन अ नॉर्मल पर्सन. सो कीप इट एज अ गोल्डन रूल. आपको कोई भी डिसीज हो,
diabetes ho, blood pressure ho, you should always you should always tell your doctor that you are suffering from so and you are taking so and so medications. Got it. So मतलब बेसिकली ये कि अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो द डॉक्टर शुड नो अबाउट these Definitely. diagnoses. Okay. So before we continue further, I would like to tell you and our audience about our diabetes community on WhatsApp. If you're serious about diabetes management and eager to connect with like-minded people, join our supportive community of individuals like you. Simply drop a message in the chat saying I'm in, and we'll make sure you get an invitation. Or else, you can find the link in our bio. So, moving on. Are there any specific oral care products such as toothbrushes or toothpaste that a diabetic should consider using to prevent gum disease? See, I would not say there is any one certain product which I would recommend to a diabetic patients, but again, everything is dependent on case to case basis. आपकी क्या क्या condition आपको present है, आपको क्या क्या symptoms present है, your treatment plan, the things which you should use would be totally dependent on you and the conditions present in your oral structure. So in this case, ideally क्या क्या हम recommend करते हैं, because हमारा saliva का production कम हो रहा है, तो अगर हमें saliva produce करना है, तो we can recommend sugar free chewing gums to stimulate saliva production. अब saliva आपका कम है, तो you are more prone to cavities, आपके cavities होने के ज्यादा chances हैं. In this case, we'll recommend fluoridated toothpaste. Next, क्योंकि gum diseases हैं, आपके swelling है, आपके inflammation है, so the toothbrush which should be used, it should be a soft bristle toothbrush. And antimicrobial mouthwashes हो गए जो हम use कर सकते हैं. And अगर आपको कोई और मतलब swelling हो रही है frequently, तो you can also go for warm saline rinsers. Okay. So just to add to this, ये जो टूथब्रश टूथपेस्ट वगैरह आपने सजेस्ट किए या माउथ वॉश, डू दे कॉन्ट्रा इंडिकेट और यू नो रिएक्ट विद द डायबिटिक का मेडिसिन या जो भी मेडिकेशंस या इंसुलिन वगैरह के साथ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं होता? See, आप I'm telling you, हाँ, जैसे if you are using a toothpaste जिसमें abrasive है, abrasive chemicals है और आपके gums में already swelling है, these can irritate your gums. So these are the one which should ideally not be used. Otherwise, आप oral structure अपने mouth में कुछ भी use करिए, you're not consuming that per se, right? Right. So it will not enter your body. Mouthwash, toothpaste, everything has to be thrown out. So you will not consume that. So in that case, you'll not be need. There's nothing which is contraindicated. But yeah, you have to be watchful of what you use. Fluoridated toothpaste का हम बात करें तो उसके साथ other considerations होती हैं कि आपके वहाँ का जो पानी है वो ज्यादा उसमें फ्लोरीन है तो नहीं, because अगर वो है तो आपको फ्लोरोसिस होने के chances हो जाते हैं. So a lot of things, again, like I said, everything has to be individually customized depending on the patient's condition. Okay. So from जो चीजें हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं to the things that we consume, are there any dietary choices a diabetic should consider to support gum health and reduce the risk of gum diseases? See, diabetes के लिए, gum health के लिए, the simple funda is कि you have to control your blood sugar levels. आपके blood sugar levels अगर control में होंगे, आपकी gum diseases भी ठीक रहेंगे. मतलब you will not be having any gum diseases. So in that case, which your dietitian suggests, you have a balanced diet, a lot of fruits, vegetables, and whole grains. अपना hydration बढ़ाइए because आपका saliva का production कम हो रहा है, so you should hydrate yourself quite more often. And one more thing, not dietary per se, but tobacco. Tobacco is a big no-no. You should never consume tobacco because not only it just hampers your oral structure, वो diabetes पे भी impact करता है. So if you are a diabetic and you have gum diseases, 100% if you consume tobacco, it will hamper your oral health. Okay. So smoking and consuming tobacco is bad. Tobacco, I guess. Yeah. Right. So can you provide some day-to-day tips for dealing with the discomfort and pain? I'm sure ये होता होगा gum disease में. So are there any day-to-day tips for dealing with those discomfort and pain?
See, लेकिन specifically with diabetics. see, diabetes is a condition which manifests gum diseases. So, Hmm. in this case, what we have to do, अगर आपको ये gum diseases हो रही है because of diabetes, so like I told you, आपको mouth में inflammation हो गया, swelling हो गया, so what you have to do, warm saline rinses कीजिए as much as you can. Hmm. आप warm saline rinses करेंगे तो वो आपको inflammation को कम करेगा. Secondly, antimicrobial mouth washes आते हैं. You have to use antimicrobial mouth washes so that microbes का जो like I said because of the scarcity of saliva उसका production हम कम कर सकते हैं. And other than that you can always go for you have to follow basic healthcare oral healthcare tips which are you have to brush twice a day, you have to floss twice a day, um, you have to do intercleaning as well, like usually people miss on that note. Interdental cleaning कीजिए, floss through कीजिए, mouthwash कीजिए, brush कीजिए. These are the basic tips which everyone has to follow. Diabetes के case में, yes, you have to give extra attention to that because you are more susceptible to have infections. Okay. So basically regular जो हमें oral health का वो maintain करना है plus for diabetics regular checkups, talking to the doctor and regular Definitely, that checkups. is a must. You Right. have to go, and so that doctor can identify a warning sign. Sometimes you cannot able to understand कि आपको अभी कुछ start हुआ है, थोड़ा सा inflammation है, but a doctor would be able to assess your condition and tell you that so and so is happening, and these are the steps which should be followed. So consult your Right. doctor, visit them, and make them understand this is your condition and this is what you're prone to. They'll keep a watch on you. Hmm. So that was